चलो, so if you see, I have given you multiple questions related to the examples to explain it to you how to correlate the objects, and now I will explain it to you through the form of algebra related to S Agrwal questions, which I want to teach you a newer topic to you. Okay, so if I have told you that you had suppose 3 samosas and you got 2 more from your brother now, so total you will have 5 samosas. Okay, this we have discussed. So if you represent samosa full spelling, you don't want to write, and if you want to represent samosa, S for samosa, so you will write it down in this form that 3s plus 2s is equal to 5s. I hope it is very clear in your mind. Same thing if I tell you that in the form of chapati, if I just want to give you a question in the form of chapati, and if I had 10 chapatis earlier, so it was 10c, and I have eaten 3 from it, so it's just minus 3c, and how many will be left? So I can write it down in the same form 7c. Okay, c for chapati, so 10 chapati minus 3 chapati, it would be 7c. Can you subtract chapati from samosa? I want answer in the chat box, please. Answer in the chat box, please. Can you subtract samosa from chapati or chapati from samosa? Very good. You cannot add samosa to chapati, and you cannot subtract samosa to chapati, or samosa from chapati, or chapati from samosa. Okay, because both are different things. Both are different things. So remember, when you are adding, you have to take care of this. What is written? मतलब इसको कहा जाता है like terms. We call it like terms, है ना? Like term का मतलब होता है बेटा, samosa will be added to samosa only, or samosa will be subtracted from samosa only. You cannot add samosa and chapati together. You cannot subtract samosa and chapati. Okay, so remember, samosa can be only added to samosa object, that is called like terms. इसको कहा जाता है like terms. So today we are going to discuss the topic related to like terms only. So now I am going to teach you a question which is just related to this only. Okay, so suppose the question comes as a plus 3a plus 2a is equal to 30, and you have to find it out. The question comes, solve the equation, जो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं ना, solving the equations. So the same is only this, solving the equation. Now before you solve this question, you are knowing that you have so many a's here, and our question says, you see this question, you have 3 times a written, है ना? 3 times a लिखा हुआ है. तो अगर आपको याद होगा, solving the equation says that you have to make the variable alone, but variable alone करने के लिए पहले हमको इतने सारे जो variable उनको solve तो करें पहले. So it's just like the question like a, like you can take it a as an apple. So this is 1 apple, this is 3 apple, and this is 2 apple. So if you talk about all together, they are 1 plus 3 will give you 4, and 4 plus 2 give you 6. So these are total 6 apples. Okay, these are total 6 apples, and is equal to 30, which was given in the question. Okay, so now absolutely correct, Subhanshu, that you will use the transpose method only now. So this is 6a is equals to 30, and आगे की प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता है. क्या करते हैं इसमें, यहाँ से हम a को अकेला छोड़ेंगे और 6 को लेके जाएंगे उधर. और 6 को कैसे लेके जाएंगे, बिकॉज 6a का मतलब होता है 6 into a is equals to 30. So when you will solve it, it will give you a is equals to 30 upon 6. Answer would be coming 5. Okay, I hope it is very clear in your mind. Is it clear or not? Can you tell me yes or no in the chat box, please? Ma'am, please explain again. Okay. So if you will see this question in a proper way, you will find that it is written 3x, 3x, and 2x. So when you will add these all, because it is having the sign of plus in all, so 2x plus 3x मिलाकर हो गया 5x, and 5x and 3x मिलाकर के हो गया total 8x.
Now 8x is equal to 40, which was given in the question earlier only. So now you have got the question as you were solving it before. It is 8x is equals to 40. And if you have to find the value of x, you have to keep x alone here and you have to spend the rest of the things on that side. So it would give us 40 divided by 8, which will give us 8 5s are 40. So answer of x would be 5. Label को high करेंगे बेटा. Let me explain it to you to the other students also. So this is 5 plus 8, which will give us 13p. This is minus 3p is equals to 50. So 13p minus 3p, which will give us 10p, is equals to 50. And when you will solve 10p means 10 into p. So when you will transfer it, it will give us 50 upon 10, and which will give us 10, p value will be 5. So this was a normal question like other questions. Now I want to make just little bit standard high, एंड हम लोग थोड़ा सा क्लास 7th की तरफ बढ़ने वाले हैं. ठीक है, हम लोगों को क्लास 7th का पोर्शन भी हम लोग इसमें थोड़ा सा कवर कर लेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन आपका कॉमेंट में ऐसा दिया हुआ है. तो आई विल जस्ट विच इज ऑलरेडी देयर इन क्लास 7th. तो हम थोड़ा सा क्लास 7th को टच करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू नाउ. सपोज द क्वेश्चन इज लाइक 3x plus 5 is equals to 2x like minus 2. This is the question, suppose. Okay, I have given you this question. Now if you see this question in a proper way in your mind, you will see that when you solve any equation, you are knowing that you are doing the solving equations, है ना? Solving equations you are doing. So when you are solving any of the equation, the rule follows the same. The rule is exactly the same, that you have to make the variable alone. ठीक है, बट बेटा वेरिएबल अलोन करने के लिए पहले हमें वेरिएबल को एक जगह रखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, एक x उस तरफ है, एक नंबर इस तरफ है. तो हम लोग पहले क्या करते थे, जो जिसके जैसा दिखता है हम उसको उसके जैसे साथ में रख देंगे. ठीक है, लाइक x x को एक तरफ, नंबर नंबर को एक तरफ. ठीक है, और आपको पता है कि जब हम किसी की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, उसका पोजीशन चेंज होता है तो उसका मूड चेंज हो जाता है. मूड चेंज करने का मतलब यहाँ है कि एडिशन बिकम्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बिकम्स एडिशन, multiplication becomes division, and division becomes multiplication. So if you see this question in a proper way, you will find इस 2x को हमें यहाँ लाना है, बिकॉज ये इसका फ्रेंड है ना, x वाला x का फ्रेंड है. तो 3x यहाँ पर पहले से था, इसको हमें कुछ नहीं करना है. ये वाला 2x यहाँ पर और लिखा है, तो हम इसको यहाँ लेकर आने वाले हैं. तो दिस इज प्लस में है, ये सामने कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है. तो ये जब यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा -2x. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की. दिस इज इक्वल साइन, इसको इक्वल ही रहने दो. नाउ -2 यहाँ पर पहले से था, उसको हमने कुछ नहीं किया, -2 पहले से वहां पर बैठा है. अब ये 5 यहाँ पर अलग से लिखा हुआ था, जिसको हमको उधर लेके जाना है. तो उधर लेके जाने का मतलब क्या हो, ये तो पहले से +5 था, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, -5 बन जाएगा ये. ठीक है, और जैसे ही -5 बन जाएगा, आपका आंसर आएगा -2 -5, विच विल गिव अस -7. एंड 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा, सो आंसर आएगा 1x. बिकॉज लाइक 3 समोसा -2 समोसा, विच विल गिव अस 1 समोसा. तो आंसर वुड बी 1x, और 1x को हम लिखते हैं x केवल. ठीक है, सो आंसर वुड बी x की वैल्यू -7. Saksham Mahalka has done it before, I think. Saurav has also done of you. So if you see this question in a proper way, you will find 2a, 3a, -5, 7 and -8. तो जब भी हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन को, तो हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल है कहाँ कहाँ पे. तो देखो, अगर इसमें गौर से देखो तो यहाँ दो तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट एक वेरिएबल उधर चला गया है ना. तो हमारा प्रोसेस कहता है, जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारा वेरिएबल सारा का सारा एक तरफ होना चाहिए. तो पहले हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को एक तरफ लेके आ जाएंगे, क्योंकि एक ए वहां छूटा हुआ है. तो ये माइनस में ए है, तो जब ये इधर आएगा ना बेटा, वो पॉजिटिव ए हो जाएगा. तो पहले स्टेप मैंने क्या किया, 2a और 3a मिलाकर के मैंने लिख दिया 5a. ठीक है, -5 जैसा था वैसा का वैसा, 7 जैसा था वैसा का वैसा, -a as it is. ठीक है, now you are knowing this is 5a this side and -a that side.
तो मैं इसको एक तरफ लेकर आई, तो एक तरफ लाने के लिए क्या किया मैंने, दिस वाज रिटन माइनस ए, जब ये इधर आएगा तो इट वुड बिकम प्लस ए, तो 5a प्लस ए, मतलब प्लस ए का मतलब कितना होता है 1a, तो 5a एंड 1a मिलाकर टोटल कितना आ गया 6a, ठीक है। और वैसे ही यहाँ 7 अकेला था, 7 को रहने दीजिए, ये -5 भी तो अपने फ्रेंड के पास जाएगा, सारे नंबर एक तरफ, this is -5, it will go that side, will become +5, so 7 plus 5 which will give us 12, so 6a is equals to 12, and then a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 upon 6, because it is 6 into a, तो ये जब उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो now a value will be coming now 2, so the answer of this question would be 2. So question number 2, a is x plus 4 is equals to 13. So when you will transfer 4 that side, it will give us 13 minus 4, and the value of x would be 9, because 9 4 comes 13. Now question number B says that 6x is equals to 48. So 6x का मतलब होता है 6 into x is equals to 48. So when you will transfer it, it would be x is equals to 48 upon 6, which will give us 8. Now moving on to question number C, it's y upon 3 is equal to 6. एक मिनट बेटा, y upon 3 is equals to 6. It will give us y is equals to 6 into 3. That will give us 18. So the value of y would be. Now question number 4, that is D. So question number D says here is y minus 9 is equals to 7. So this is minus 9 will go that side. So it would give us 7 plus 9. So 7 plus 9, which will give us here 16. So value of y will come here 16. Now question number E. Question number E is here 3y plus 1 is equal to 16. So it's just like a question which we have done it yesterday only. Like not yesterday, it was Saturday. So it would be 3y. पहले हम 1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 minus 1, which will give us 15, and the value of y would be 15 upon 3, which will give us only 5. 3 5s are 15. So the value of y will come as 5 only. Now E question कर लिया. Now coming to now F. F question is 1 upon 3y plus 2 is equal to 6. तो सबसे पहले हम 2 को ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा y upon 3 is equal to 6 minus 2. 6 minus 2 मतलब कितना होता है बेटा 4. So y upon 3 is equals to 4, and when you will transfer this 3 that side, it will give us 4 into 3, and value of y would be 12. Question number G, which is given here, is E F कर लिया, हाँ G now. So G question is 3x plus 2 is equal to 8 plus x. Now the same question which we did it today, the same pattern of question which we did it today. तो पहले x को एक तरफ ले लेंगे, तो this is 3x, ये वाला x इस तरफ आएगा तो it will become minus x. 8 वहीं का वहीं रहेगा, और ये वाला जो 2 है वो उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2. ओके, नाउ 3x में से 1x गया, बचा कितना ओनली 2x, और यहाँ पर 8 में से 2 गया, बचा कितना 6. नाउ ट्रांसफर इट, so this 2x का मतलब हो जाएगा 2 into x. When you will transfer, it will give us x is equals to 6 upon 2. The value of x would be 2 3 जा 6, मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी 3. So these are the questions related to question number G. Now H वाला कर लेते हैं. H I J तक complete हो जाएगा बेटा. You will be doing it till J. So now we are moving on to question number H. This is 7y minus 5 is equals to 5 upon 6. Now if you see this question properly, ये 5 उधर जाएगा, so it would give us 7y is equals to 5 upon 6 plus 5. Now when you will transfer it,
it will give us 7y is equal to 6, and this will give us 5 plus 30. It will give us 35 upon 6 is equals to 7y. इसके आगे का बेटा हम we will be doing it in the next class because it will take time to explain this pattern. I have not explained you this.